ऑप्शन ए। सो ये सब बहुत कुछ इजी एमसीक्यूज थे। चलिए, आई होप you all might have done this. Now let's move to another topic, temperature. Or before we start this temperature, let's take a break of like 5 minutes and then we will resume this topic. Share back with and let's start. So here we are with a different new chapter and topic and temperature in geography. Okay, here we will see that how the temperature is being varied or factored by reasons like latitude and altitude and other reasons, and how the concept of temperature inversion plays an important role in the sustenance of life on the planet Earth, as otherwise which might have caused क्या बोल रहा था मैं भूल गया, हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन। सो मतलब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इट हेल्प्स इन सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, और लाइक मतलब जहाँ पे भी ठंड जगह है वहाँ पे इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर। हॉट लाइक फिनोमेना, लाइक बहुत सारे आप देखेंगे लाइक द गल्फ रीजन, हॉट दे आर स्टिल नॉट फ्रोजन, that is due to the phenomena of like temperature inversions. So we'll all just see in the lectures which we'll have to just proceed. So if we see temperature, let's start. ठीक है, if we talk about temperature, ठीक है, so how can temperature be defined? So to define temperature, like suppose this is a surface, so it is in measurement in degrees of how hot और कोल्ड ए थिंग और प्लेसेस। लाइक यहाँ पे क्या इसका टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर, मतलब हाउ हॉट और हाउ कोल्ड, लाइक मेजरिंग इट इन डिग्रीज। ठीक है, सो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट, ठीक है, इट इज अ मेजरमेंट इन डिग्रीज, बट ऑब्वियस डिग्रीज क्या है, उसकी यूनिट है। ठीक है, हाउ हॉट और कोल्ड ए थिंग इज ऑफ ए प्लेसेस। सो इफ विल सी द वेरियस फैक्टर्स which control the temperature. If you see the factors controlling temperature distribution, there is one of the most factors is latitude, right? So it says it has a direct control on temperature as the insolation is inversely proportional to the latitude. ठीक है, like ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि it is inversely proportional to the latitude? Now we know the earth, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होती है, तो यहाँ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट है, एंड एज द डिग्री इज इंक्रीजिंग बट द सोलर रेडिएशन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द रेज आर स्लैंटिंग. सो व्हेन द रेज आर स्लैंटिंग, सो इट इज सेइंग दैट द इंसोलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड. यहाँ से जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो उसका जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो घटता है. सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इज कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड. दूसरी हम बात करेंगे तो एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. एज वी नो दैट लाइक एज वी मतलब द एल्टीट्यूड होता है जो फॉर एवरी 165 सेंटीमीटर 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होती है वो कूल डाउन होती है, डिक्रीज करती है. सो देयरफॉर लाइक द प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड लाइक द माउंटेन्स दे आर कोल्डर एज कंपेयर टू द प्लेन्स. ठीक है, सो एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, हायर द एल्टीट्यूड लोअर इज द टेम्परेचर. ठीक है, नाउ द अनदर फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन. हाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज लाइक वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए अगर हम देखेंगे लाइक दिस इज आवर इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे सी है, दिस इज द अरेबियन सी, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, राइट. नाउ एज वी नो दैट द incoming solar radiation is able to hit the landmass very rapidly as compared to the sea. तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होता है, एंड जो वहां पे होती है वहां की प्रेशर वो एयर सिस्टम ऊपर जाती है. ये जो एडजॉइनिंग एरिया में जो सी है वहां पे जो है द एयर इज नॉट हीटिंग अप, सो एज कंपेयर इट इज गेटिंग हीटेड अप बट इट्स नॉट गेटिंग एज हीटेड एज क्विकली एज ऑन द अर्थ. सो here the air is not that warm as compared to that on the land. So when this air has the warm air rises, the adjoining areas of the sea, यहाँ की जो cold होती है as compared to the adjoining places on the land, that rushes to fill in, right, and those causes land and sea breeze, the phenomena of
लैंड एंड सी ब्रीज, जिसके कारण इट इज एबल टू मेंटेन लाइक द जो एडजॉइनिंग सी एरियाज के टेम्परेचर होते हैं, इट इज एबल टू कूल डाउन द temperature. So distance from the sea, the places situated near the sea comes under the moderating influence of the sea and land breezes, which moderates the temperature. Wait, ठीक है, जैसे दिस प्लेस इन दिल्ली, दिस इज फार फ्रॉम लाइक सी, सो इट डज नॉट हैव दैट मच ऑफ ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेस ऑफ द सी, whereas दिस कोस्टल एरियाज, राइट, मैंने क्या बोला यहाँ पे, जैसे वार्म एयर विल राइज अप, द एडजॉइनिंग कोल्ड एयर ऑफ द सी रसेस टू फिल इन एंड देयरफॉर एबल्स टू हेल्प टेक अवे द टेम्परेचर. सो यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज में होते हैं, यहाँ पे लैंड एंड सी ब्रीजेस होते हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सॉरी, इंटीरियर ऑफ द लैंड विच इज फार अवे फ्रॉम द सी, that does not get affected much by the land and sea breezes. So distance from the sea, those also helps into controlling the temperature distribution. ठीक है, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. Now it is saying air mass circulation and ocean currents, right? Will further like in further मतलब just the next lecture will be drawing the importance of this air mass circulation and the ocean currents. So there are actually basically two kinds of ocean currents. One is like the cold ocean currents and one is the warm ocean currents. Like ये अगर हमारा अर्थ है, और ये टॉपिक्स हम ये आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे अभी, विंड एंड प्रेशर बेस्ड सिस्टम. ये जब इक्वेटर पे ऐसे प्रेशर बेस्ड चलते हैं और जो लैंड मासेस आते हैं, तो व्हेनेवर दिस प्रेशर बेस्ड सिस्टम्स हिट द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ड्यू टू द गैदरिंग ऑफ द टेम्परेचर, दिस सरफेस इधर वाले जो करेंट्स होते हैं ये वार्म होते हैं. बट व्हेन देन इट circulates and reaches to the western side of the continents, it gathers moisture from the sea and those currents are more colder. So the places which come under the influence of warm air masses, oceans current experience higher temperature, and the places that come under the influence of cold air masses experiences low temperature. इस डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ. Like this is the earth and ये हमारे यहाँ पे प्रेशर बेस्ड सिस्टम्स चलते हैं. Now when this is coming, this is gathering temperature. अब ये जो कॉन्टिनेंट है, now when this will hit this eastern side, this will be warm ocean currents, right? And now when this currents, now this is like a sea area, and then again suppose this is another continent. Now when this moisture has been gathered from this ocean current and will now hit the western coast of the continent, so this will be a cold air current, right? ये अभी हम अगले वाले चैप्टर में समझेंगे. मैं आपको फिर भी एक बेसिक लेमैन समझा दिया कहाँ पे कोल्ड एयर करंट होता है और क्यों एक वार्म एयर करंट होता है. सो एयर मास सर्कुलेशन एंड ओशन करंट्स, दोस आल्सो हेल्प्स इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. And there are local aspects of wind, vegetation, cover, those also helps. Like there are winds, अलग अलग नाम दिए गए हैं, फोइन, चिनोक, ठीक है, those are like cold winds and the hot winds. मॉनसून में यहाँ पे भी हमारे यहाँ लू चलता है, that is a kind of hot wind, ठीक है. vegetation, like why the Sahara or the desert areas, they are more like temperature is more, and the places like if you see like the Western Ghats, right, if this is, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स पे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू लाइक इन दिल्ली. टू द वेजिटेशन एंड कवर एंड स्लोप लाइक द Himalayan regions, if you'll see, those are the temperatures, the local aspects which determine the temperature of a place. And this is surface properties like albedo, the reflecting property, which also controls the temperature of a place. See, this is another one of the two topics in like temperature which we have to understand. One is the normal lab state, ठीक है, and another is albedo. अगर हम नॉर्मल लैब स्टेट की बात करें तो नॉर्मल लैब स्टेट किसे कहते हैं? तो नॉर्मल लैब स्टेट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट. एज वी सेड
कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट, फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इट इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, बात बराबर ही है, ठीक है, अदर इट इज फॉर 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1000 मीटर, ठीक है, दोनों तरफ करेंगे वही बात। तो दैट इज अ नॉर्मल लैप्स रेट, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट। एंड इफ यू टॉक ऑफ एल्बिडो, तो एल्बिडो इज द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, amount of sunlight reflected by surface measured from scale 0 to 1, it is a perfect reflector. Like if you see the fresh snow, मतलब जब स्नो होता है तो जब फ्रेश होता है तो it has a property it reflects, देखिए the body which is जितना डार्क होता है it absorbs and the body is how much maximum white it is, it reflects more. So fresh snow that is almost close to pure white, so it reflects more than the oceanic ice, ठीक है, एंड देन द सैंड एंड द ग्रीन ग्रास एंड द सॉइल, फॉरेस्ट, ओपन ओशंस एंड चारकोल, ठीक है, इसको आपको याद करने क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने की जो फ्रेश स्नो है दैट हैज द मैक्सिमम एल्बिडो, देन आफ्टर दैट वी हैव द ओशियनिक आइस, लोग यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, ओशियनिक आइस बाद में आता है, एंड देन द सैंड, ये तीन थोड़ा प्रोमिनेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग, एंड आफ्टर दैट देन विल बी द ग्रीन ग्रास एंड द सॉइल एंड द अदर फैक्टर्स। सो दिस एल्बिडो कैसे इफेक्ट होता है, द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज। नाउ देयर इज अनदर टॉपिक इन टेम्परेचर विच इज नोन एज टेम्परेचर एनोमली। व्हाट इज एनोमली? एनोमली इज विच इज नॉट, मतलब एक पर्टिकुलर रूटीन, ये मतलब पर्टिकुलर चीज को, पैटर्न को जो नहीं फॉलो करे, दैट इज एन एनोमली, ठीक है, दैट इज एन रेगुलर हैबिट एंड इट इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट इज टेम्परेचर एनोमली। सो इफ यू सी, इट रिफर्स टू अ कंडीशन when the temperature of a place is different from the mean temperature of the latitude of which it is located, right? Like suppose this is Earth and like these are the various latitudes हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, longitudes and latitudes। तो latitudes में हम लोग पढ़ते हैं the equator and the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn। So what does latitudes, they join the places having the equal temperature, so it says refer to condition when the temperature of a place is different from the mean temperature of the latitude of which it is located। like यहाँ पे on an average 23 degree temperature है, and suppose on the same latitude if temperature is 45 degree, so this is anomaly, because if here is 23 degree and surrounding area is 22 24, the temperature mean is 23 but it is like 40 degree or 45 degree, तो वो anomaly कहते हैं। So what is a positive anomaly and a negative anomaly? These are the two different anomalies which we understand। Temperature is more than the mean temperature of latitude, मतलब अगर जो मीन टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर क्या, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है पर उस प्लेस की टेम्परेचर इज लाइक 40 डिग्री, means when the temperature is more than the mean temperature, so that will be positive anomaly, ठीक है। like the example is the Sahara Desert। Sahara Desert क्या है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है as compared to the places on the same latitude। and if we talk of negative anomaly, means here the temperature will be low as compared to the mean temperature of the latitude, like the Himalayas or the Mount Everest, ठीक है, Mount Everest, यहाँ पे अगर ऊपर पे जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस बहुत lower है as compared to the places on the same temperature on the same latitude। so this is temperature anomaly। so that's another word called as isotherms, हम लोगों ने पढ़ा था। there are various, whenever this is iso, what does iso means same। isotherms are imaginary lines joining places having equal temperature, ठीक है, imaginary lines joining having places having equal temperature। ideally for homogeneous earth isotherms should be following latitudes। मतलब क्या है कि अगर ये अर्थ है और ये
तो क्योंकि ये अर्थ रोटेट कर रहा है और ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, तो जनरली द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एट द सेम लैटिट्यूड शुड हिट equally all places. So it is saying ideally for homogeneous earth, astrotherms should be following latitudes, but due to land water heat difference, they bend in different directions, cause the land gets heated rapidly. Means like if there is land and sea at the same latitude, अब हमें पता है कि sea का जो water है that gets heated slowly as compared to the land which gets heated rapidly. So on the same latitude there will be a difference in the isotherms of the land and the sea. So general rule, while crossing land and the isotherms in any hemisphere bends towards pole equator to negate the effect of the seasons. Example, in January the isotherms deviate to the north. जनवरी में क्या होता है? The isotherms deviate to the north over the oceans and to the south over the continents. Like if this is the isotherms, it is saying that in January the isotherms deviate to the north over the oceans. Like if there is an landmass and an oceans. Now, if it is crossing from the oceans to the landmass, we say in January the isotherms deviate to the north over the oceans and to the south over the continents. ठीक है? It is just for reading. ठीक है? ऐसा कोई डिटेल isotherms पूछते नहीं है. बस जब वो डायग्राम होता है किसी isotherms को तो आपको